Now we'll start exercise 2.4, Roman number 1. See the questions here. Here 6 questions are there. First question is given 12 divided by 3 upon 4. Use your method, write down solution. 12. Division sign, change into multiply. And reciprocal of 3 upon 4 is equal to 4 upon 3. Now, numerator, denominator you can cancel. 3 ones are, 3 fours are 12. So, what is the answer here? 4 into 4, 16. Okay, now we will go to second question. 14 into reciprocal 6 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा. 14 6 64. Sorry, 84. 14 6 84 upon 5. 84 को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है देख लो. 5 1 जा 5, 3 बचा. 5 34 में कितना भर जाएगा? 5 6 30, then 4 is remain. So 16, 4 upon 5 is the answer. Okay, third one. 8 into 7 upon 3 is reciprocal of 7 upon 3 is 3 upon 7. That is 8 3s are 24 upon 7. That is 7 24 में कितना भर जाएगा? 7 3s are 21. बचा कितना? 3 बचा. Okay, 3 upon 7. Next, 4 divided by 8 upon 3. 4 into 3 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा. तो 4 and 8 को देख लो. 4 का टेबल में 8 है. 4 1 जा, 4 2 जा. तो रिमेन आंसर इज 3 upon 2. Next one. 3 into. Now we have to convert. Okay, first don't write into. Just as it is write down division. Next you convert into improper fraction. 3 2s are 6. 6 plus 1 7. That is 7 upon 3. Now you can take reciprocal. Before taking reciprocal, you have to change the sign. That is multiply and 3 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा. तो क्या आया? 3 3s are 9 upon 7. This you can convert it into mixed also. 7 1s are 7, 2 remaining. Then 1 2 upon 7 is the answer. Then last sum is 5 divided by. Again you convert it into improper fraction. 7 3s are 21. 21 plus 4 25. 25 upon 7. Okay. Then you have to take reciprocal. 5 into 7 ऊपर जाएगा, 5 25 नीचे आएगा. तो क्रॉस में देख लो. 5 1 जा, 5 5 जा 25. So what is the answer? 7 upon 5 is remain now. 5 डिवाइड करो. 5 से 7 को डिवाइड किया तो 5 1 जा 5. 2 is remaining. 2 write down here. So 1 2 upon 5 is your answer. Now we'll do Roman number 2. That is find reciprocal and classify as proper, improper and whole numbers. ये क्वेश्चन को क्या करना है? इधर 7 क्वेश्चंस दिया है. सबका रेसिप्रोकल देखना है और हम लोगों ने क्लासीफाई करना है. उसमें कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा होल नंबर. ओके, नाउ वी विल डू वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 upon 7. राइट डाउन रेसिप्रोकल 3 upon 7 is equal to 7 upon 3. 7 upon 3 क्या है? प्रॉपर है क्या, इम्प्रॉपर है क्या देखने का. न्यूमरेटर ज़्यादा है, दैट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज इम्प्रॉपर. ओके, नाउ सेकेंड वन. 5 upon 8. Reciprocal of 5 upon 8, that is 8 upon 5. इधर भी क्या दिख रहा है तुम लोगों को? न्यूमरेटर ज़्यादा दिख रहा है, इसके लिए ये भी इम्प्रॉपर. ओके, नाउ थर्ड वन. 9 upon 7. Reciprocal of 9 upon 7 is equal to 7 upon 9.
दैट इज अभी डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका मतलब दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट फोर्थ वन, 6/5 रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज इक्वल टू 5/6. इधर भी डिनोमिनेटर ज़्यादा है, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ फिफ्थ सम, 12/7 रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 is equal to 7/12. Here also denominator is more, that is why this is also a proper. Sixth sum, 1/8 reciprocal of 1/8 is equal to 8/1. ओके, 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो 8 इज ए होल नंबर. नेक्स्ट लास्ट वन, 1/11 दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज इक्वल टू 11/1. दैट इज ऑल्सो ए होल नंबर.